हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 323। सो ये टोटल हेड पे एक प्रॉब्लम है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू पाइप एट 8 मीटर पर सेकेंड अंडर 1.8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल प्रेशर। सेंट्रल लाइन ऑफ वाटर इज 2 मीटर एबव डेटम। फाइंड टोटल हेड, टोटल एनर्जी ऑफ वाटर। तो हम यहाँ जानते हैं कि आपका जो V दिया है, V इक्वल्स टू आपका 8 मीटर पर सेकेंड दिया है। रो ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब है। और आपका P दिया है, दैट इज प्रेशर इज 1.8 इंटू 10⁵। तो P बाई रो जी आपका जो आ जाएगा हेड के फॉर्म में, दैट विल बी योर 1.8 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई रो मीन्स 1000 इंटू 9.81। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हेड प्रेशर हेड कितना हो जाएगा 1 न्यूटन के लिए 1.8 डिवाइडेड बाई 9.81 दिस इज 18.34 दिस इज योर मीटर, दिस इज मीटर। And what about this kinetic energy head? Kinetic energy head equals to B square upon 2G. So this will be your 8 square upon 2 into 9.81. So this will be your 64 divided by 2 divided by 9.81. This is 3.26 meter. And your Z equals to 2.0 meter. So your head for one Newton weight, Newton per second weight you can say equals to H equal to Z plus B square upon 2G plus P upon rho G. So this will be your 2.0 plus B square 3.26 plus 18.34. So this will be your total head 3.26 plus 2 plus 18.34. So this is 23.6 meter head. So total energy will be for 1 Newton this is, so 23.6 Newton meter per Newton. This is total energy for 1 Newton, so 23.6 Newton meter per Newton. So in this way you can find out, solve the problem. Thank you for being with me.